Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English grammar, chapter number 5, pronouns part 2. In the last video, we have studied the different kinds of pronoun. We have studied personal pronoun, then demonstrative pronoun, then possessive pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, and so on. So now in this video, we are going to study about interrogative pronoun, indefinite pronoun, emphatic pronoun, and the last is reciprocal pronouns. Okay students, so let us start. Interrogative pronoun is used for asking questions. ठीक है, it is used जब हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं तब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की हेल्प लेते हैं, and they are who, what, which, whose and who. All these words are interrogative pronouns. They are used to ask question. For example, who is standing at the door? Who की मदद से हमने यहाँ पर interrogative pronoun लगा करके we have asked a question. Now point number 7. Indefinite pronoun. We use indefinite pronouns. They are used they do not refer to particularly to any noun. Means यहाँ पर noun या pronoun की बात करें या subject की बात करें, it is not fixed. ठीक है, जब subject पता नहीं होता है, it is indefinite. ओके, जैसे हम आर्टिकल्स में भी देखते हैं indefinite articles, जैसे a और n को हम लोग कहते हैं, कोई भी हो सकता है जो हमें पता नहीं होता है, it is unknown. So when your noun and pronoun is unknown, which is not fixed or which is not specific, then we use indefinite pronoun. अब इनमें कौन से pronoun आते हैं? They are someone, anyone, somebody, everybody, etc. Okay, as well as nobody also. Let us see how we use them. Nobody was available to answer the call. Subject यहाँ पर पता नहीं है यहाँ पर, ठीक है? So इसीलिए हम use करते हैं all these words. Number 8. It is emphatic pronoun. Are used to emphasize a noun or pronoun. With the help of these we emphasize a noun or a pronoun. मतलब subject के ऊपर हम stress डालते हैं. Here we create the importance of subject. Importance of subject हम कैसे create करते हैं? हम with the subject we use pronouns self add करके हम pronoun use करते हैं. जैसे for example your के साथ हमने add किया है self और बनाया है yourself. So we use these given words with the subject like myself, yourself, himself, herself, itself. ठीक है, ये हम यूज करते हैं exactly subject के साथ में ही to create emphasize or to create importance of subject. We use these pronouns along with the subject. ठीक है, for example you yourself can do it. Okay, so we are studying about emphatic pronoun. अगर हम last video के बारे में देखें, there also we have studied these words. ये word भी हमने वहाँ पर पढ़े थे. So आपको confusion हो जाएगा कि ये words तो हमने किसी और में पढ़े थे. So we have studied this word in reflexive pronoun. Okay, तो subject को reflect करता है. It shows the subject. दोनों में difference इतना है कि we use the reflexive pronoun at the place of object. उसको हम object की मतलब ending के place पे use करते हैं. Whereas emphatic pronoun में वही pronouns को हम कहाँ use करते हैं? Starting में. We use them with the subject. अब ये एग्जांपल है emphatic pronoun का. अगर इसी को मुझे reflexive बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? You can do it yourself. ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आपको ये लिख देना है, तो बन जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई एम रिपीटिंग अगेन, टू मेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, आपको वही एक्सरसाइज आगे सॉल्व करनी है. टू मेक इट एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऑल दोस प्रोनाउन जो सेल्फ से एंड होते हैं आपको उन्हें रखना है एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन द सेम वे अगर एम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हो सो वहां पर योर प्रोनाउन शुड बी नियर टू द सब्जेक्ट. वो सब्जेक्ट के बाजू में, सब्जेक्ट के साथ में लिखे जाते हैं. क्लियर? ओके, नाउ द लास्ट प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इट शोज एन एक्शन और अ फीलिंग बीइंग रेसिप्रोकेटेड. ओके, यहां पर एक्शन दिखाई जा रही है कि दे हेल्प. तो कैसे हेल्प किया है? दे
other. So each other, one another, such kind of word we use in reciprocal pronoun. Okay, now let us solve question number 1 in exercise number D. You have to make sentences. You have to use the word and make two sentences, one for reflexive pronoun and another for emphatic pronoun. So let us use the word herself and make a reflexive pronoun. So हम लिखेंगे she cooked the food herself. As I told you before, अगर हम reflexive pronoun के बारे में बात करते हैं, your pronoun will be at the end. So she cooked the food herself, end में आया. Whereas I told you before, if you are making emphatic pronoun, आपका pronoun starting में आएगा. So लिखेंगे she herself managed all the work. She herself managed all the work. So you can see herself हमने in emphatic pronoun में starting में लिखा along with the subject. So meaning says that we use these emphatic pronouns to emphasize the noun or pronoun. Noun pronoun ये आपका pronoun है. Pronoun के बारे में हम importance create कर रहे हैं कि she herself managed. Okay, so इसके द्वारा we have created the importance of the subject. Okay, now the last exercise is about exercise number E. You have to join the given pair of sentences along with the help of relative pronoun. Relative pronoun आपको use करने हैं. उनमें क्या आता है? For your reminder, I have written over here. It includes who, whom, which, whose, that. These are the words which are used in relative pronoun. They relate the subject in the sentence. For example, who and whom we used with human beings. Okay, who and whom हम human beings के साथ use करते हैं. Whereas whose, whereas which and that we use with animals and mainly non-living things के साथ हम use करते हैं. Which, that. Okay, and remaining whose जो है हम दोनों में use करते हैं. ठीक है? This is the main thing when you solve the question. So Minnie is a fashion designer. Okay, starting वाला sentence का जो part है हम लिखेंगे Minnie is a fashion designer. Now here pronoun जो दिया है आपको उसे replace करना है. You have to use the relative pronoun. So Minnie is a human being. So हम लिखेंगे Minnie is a fashion designer. So हम select करेंगे the word who. Who takes orders from celebrities. Okay, so in this way you have to solve the given questions of exercise number E with the help of these pronouns. इनकी मदद से आपको सॉल्व करना है. ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट के बेस पे सब्जेक्ट रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, और वर्ब भी है अगर रिक्वायरमेंट के बेस पे आपको उन्हें भी ऑल्टर करना पड़ता है. So students, that's all for today. In this video we have studied the use of interrogative pronoun, indefinite pronoun, emphatic pronoun and reciprocal pronoun. I hope you understood it.